Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I'll be solving question number 1 from exercise 10.1 from unit number 10, that is tangent to a circle. In this question, let's read out the question first. Prove that the tangents drawn at the end of diameter in a given circle must be parallel. So the given is a circle, two tangents and one diameter. Let's label the diagram first. This red color line AB is the diameter. Then these two lines, let's say CD, and this one is EF. These two are tangents. So CD and EF are tangents to the given circle. CD is the tangent to a circle at point A and EF is the tangent to a circle at point B. Now what we have to prove that CD is parallel to EF. यहाँ पे सिर्फ एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वो अगर किसी तीसरी लाइन के साथ एक जैसा एंगल बनाती हैं तो दिस मीन्स द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. नाउ इफ़ वी सी दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 एंड L2 इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3, तो हम कह सकते हैं कि L1 जो है पैरेलल टू L2 है. यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि यही प्रूव कर दें कि ये जो लाइन सी डी है और ई एफ है ये ए बी के साथ 90 का एंगल अगर बना रही हैं तो दिस मीन्स द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके, नाउ गिवन इज ए बी which is the diameter of circle. AB is a diameter of a circle and with center F. Center O. Now CD, all the things which are given to us we have to write. CD is tangent to a circle at point A and EF is tangent to a circle at point B. Right? Hope you understand what is given to us. One circle, one diameter and two tangents. Right? Now what you have to prove, let's write it down. The two lines CD, it is a tangent line, it is parallel to EF. This is the thing that we have to prove. Now let's start with the statements and reasons. Okay. Now AB is the diameter of a circle with center O, and since AB is the diameter, so OA and OB are the radii of the same circle. Let's write this down, that OA and OB, this is the thing given to us because AB is the diameter, so OA and OB are radii, right? Okay. Now अगर हम देखें तो OA जो है and CD is also tangent to a circle at point A, you can say. So we can write it that OA is perpendicular to CD, right? Now ये जो OA है, this is the tangent line which is this is the radial segment which is perpendicular to tangent line. This we have done in a theorem that radial segment is perpendicular. This is a symbol for perpendicular. Radial segment is perpendicular to tangent line. ठीक है, और रेडियल सेगमेंट कौन सा है? ओ ए है. टेंजेंट लाइन कौन सी है? सी डी है. सो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का एंगल बन रहा है. नाउ ओ ए इज़ अ पार्ट ऑफ ए बी एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज़ द डायमीटर. सो इफ ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी देन दिस मीन्स ए बी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी. वाई? बिकॉज ओ ए इज़ अ पार्ट ऑफ ए बी. सो दिस मीन्स, क्योंकि क्या इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ए बी इज़ द डायमीटर. AB is the diameter. It is given to us that AB is the diameter and OA is a part of AB. So AB is also perpendicular to CD. Now let's move to the other line. Which line it's going to be? Now we'll talk about EF, right? Similarly now EF is a tangent line. कहाँ पे point of contact बन रहा है उसका? B पे. So हम कह सकते हैं similarly we can write it like that OB is perpendicular to EF,
राइट। और द सेम रीज़न इज कि रेडियल सेगमेंट जो होता है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सो वी कैन राइट बाय थ्योरम रेडियल सेगमेंट is perpendicular to tangent line, right? So if OB EF के perpendicular है and OB is a part of AB, right? क्योंकि वो आपके पास वो है diameter, so OB is perpendicular to F. Also we can say that AB is perpendicular to EF, right? So why? Because AB is the diameter. AB is the diameter, right? So अब हमने ये तो अभी हमने ये प्रूव कर दिया. लेट्स से अगर हम इसको L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं और इसको L3 कहते हैं, तो L1 L3 के साथ आपके पास 90 का एंगल बना रही है. सिमिलरली L2 भी L3 के साथ 90 का एंगल बना रही है. तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं. तो अगर हम देखें ये वाला, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें, इसको हम इक्वेशन 2 कह दें कि AB is perpendicular to CD and AB is also perpendicular to EF. So this implies that कि आपके पास CD, this implies that tangent CD is parallel to tangent EF, and this is from 1 and 2, right? Hope you understand this question कि आपस में आपके पास ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं, बिकॉज दीज टू पैरेलल लाइंस मेकिंग द सेम एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री विद द थर्ड लाइन, right? Hope you understand the sum. To question number 2 now. The diameters of two concentric circles are 10 centimeter and 5 centimeter. Look for the length of any chord of the outer circle which touches the inner one. So the very first thing that we need to know, what are concentric circles? The circles which have common center are called concentric circle. So if I say O is the center of the inner circle, for concentric circles the outer circle is having the same center as O, right? So the diameters of two concentric circles are 10 centimeter and 5 centimeter. So if the diameters are given to us, we can easily find out the radius. So if I say OC is the radius of inner circle, obviously inner circle will be having a smaller radius and a smaller diameter. So 5 is the diameter of the inner circle. So 5 divided by 2, 2.5 is the radius for the inner circle. And OB is the radius of outer circle. So diameter is 10, so radius will be 10 divided by 2, that is 5 centimeter. Let me draw the radius. Let me draw the radius of inner circle with red color and outer circle with the green color. Okay, wait. Oh, yes. And let us label it OB, which is of 2.5, and OC is of 2.5 and OB is of 5 centimeter, right? Okay. Now the other thing is, look for the length of any chord of the outer circle. So for the chord we need to have the outer circle. आउटर सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ करनी है. सो हमारे पास लेट्स से कॉर्ड क्या होती है, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन करती है, दैट इज़ द कॉर्ड. सो आई हैव मेंशन्ड इट एज AB. सो अगर आप देखें तो आउटर सर्कल के लिए ये ब्लू लाइन जो है, दैट इज़ द कॉर्ड, and for inner circle the same line AB is considered to be as the tangent line, right? क्योंकि वो उसको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ज्वाइन कर रही है, विच इज़ अ C पॉइंट. सो अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर और ब्लू कलर के दरमियान जो एंगल बनेगा, दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री, right? Why? Because the radial segment is always perpendicular to its tangent line, and we can also write as OC is perpendicular to AB, because the radial segment is perpendicular to the tangent line. अच्छा, दूसरी चीज़ हमने एक और थ्योरम पढ़ा हुआ है. अब आउटर सर्कल की अगर बात करें तो आउटर सर्कल के ऊपर ये कॉर्ड बन रही है, राइट? और ये आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है? तो लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो AC और BC जो है वो आपके पास इक्वल है, सेम है,
राइट। सो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये चीज़ फाइंड कर लें और इसको डबल कर लें तो हमारे पास पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। नाउ इफ़ यू सी द ट्राइंगल ओ सी बी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, and for the right angle triangle we can easily apply Pythagoras theorem, which is of hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, right? So hypotenuse का क्या है यहाँ पे 5 का square, that is equal to base is 2.5 का square, perpendicular is BC का square, right? So 5 square is 25 and 2.5 square is 6.25, and since we have to find BC so we'll write it as it is. So 25 minus 6.25, that is equal to BC square, and it comes out to be as which is 18.75. If we'll take the square root on both sides, so this implies that measurement of BC is equal to 4.33, right? Now, how we are going to find the measurement of full chord AB, the length of the chord that was asked in the question. The length of chord will be equal to AB is equal to BC plus CA, right? So BC is equal to 4.3, CA is same as BC क्योंकि सेंटर फ्रॉम द सर्कल से जो लाइन यहाँ पे आ रही है उसने कॉर्ड को इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है. सो 4.3 आ जाएगा, so it will be 8.66 centimeter. Hope you understand the sum. Thank you. Question number 3 now. AB and CD are common tangents drawn to a pair of circles. If A and C are the points of tangency of first circle, where B and D are the point of tangency of second circle, then prove that AC is parallel to BD. Now let's label the diagram. I have already drawn two circles, one with center O and another with center P, and I have already drawn two tangents, one with the red color and another with the blue color. Okay. Now what I am going to do is I am going to do the labeling. AB, let's say if I say कि AB हमारे पास ये वाली tangent है, the one in the red color, right? And then CD is this tangent, the one in the green color. So as they have already said, A and C are the points of contact of tangency of first circle, right? First circle, and where B and D are the points of tangency of the second circle. So A और C first circle का point of tangency हो गया और B और D second circle का point of tangency हो गया. Point of tangency means tangent line जहाँ circle को meet up कर रही है. Okay, now then prove that A, C and B, D जो है वो आपस में क्या है, parallel है. So अगर A C को प्रूव करना है B D के, then we must join A C with B D, right? Let's join A C with B D. So I'm going to join this A with C and then B with D, right? So ये हमने क्या कर दिया, this was the thing that was already given to us, right? There were two circles, two tangents and their point of tangency, and then we have joined just AC and BD. Now let's do the construction. We are supposed to join O with B, join O to P and extend it to Q, और Q कहाँ लाया करेगा, Q at BD पे लाया करेगा, right? Also ये जो OP लाइन हमने join की है, ये OP meets AC at M, ठीक है. अच्छा, अभी ये जो कंस्ट्रक्शन लिखी है ये हम बना भी देते हैं कि क्या कह रहे हैं कि O को P तक ज्वाइन करें और उसको एक्सटेंड करें Q तक, और Q कहाँ लाया करेगा, BD पे. और दूसरी चीज़ क्या है कि लेट्स डू द अदर लेबलिंग, कि जो OP लाइन है ये AC को कहाँ मीट कर रही है, M पे, और ये आपके पास क्या था, Q था. So what we have done, we have joined O to P and we have extended towards it to Q, और Q कहाँ लाई कर रहा है, BD पे, और ये जो OP लाइन है ये AC को कहाँ मीट अप कर रही है, M पॉइंट पे, राइट. अच्छा, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन AC है, लेट्स से लाइन AC अगर मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, AC आपके पास है, लेट्स से L1 मैं कह दूँ, और BD हमारे पास है, लेट्स से इसको मैं L2 कह दूँ. सो अगर हमने क्या प्रूव करना है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट. सो हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों लाइंस को किसी तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर प्रूव कर दें कि दोनों का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम कह देंगे कि ये लाइन L1 जो है वो L2 के पैरेलल है.
राइट। पैरेलल प्रूव करने का यही तरीका होता है कि दो लाइंस जो हैं वो किसी तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, 90 का एंगल बना दें, तो हम कह सकते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है। Now let's see how we can prove that these two lines are perpendicular to that OQ. Okay, let's move towards the proof, and we'll write it with statements and reasons. Statements and reasons. Okay. Now, if you see OM is perpendicular to AC. How? By theorem हमने पढ़ा है कि जो लाइन सेंटर से कॉर्ड AC is also a chord, so जो लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर आ रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है. So we can write by theorem the line from the center to a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, is perpendicular to the chord, right? अच्छा, अब अगर ओ एम ए सी के परपेंडिकुलर है तो ओ को हमने कहाँ तक लेके गए थे, ओ पी तक और ओ क्यू तक. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी देन ओ क्यू विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू ए सी. सो ओ क्यू भी क्या होगा, ए सी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थी, वो उसने उसको ज्वाइन कर दिया था, राइट. सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी. अब अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए भी ये प्रूव करते हैं, अगर आप देखें तो पी क्यू, सिमिलरली वी कैन राइट दैट पी क्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी डी, राइट. पी क्यू जो है वो बी डी के परपेंडिकुलर है विद द सेम रीज़न, क्योंकि पी सेंटर है, राइट. सो पी आपके पास सेंटर है और पी क्यू जो है वो कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, राइट. सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी डी और पी क्यू वॉज अ पार्ट ऑफ ओ क्यू, राइट. सो ओ क्यू, so OQ is also perpendicular to BD, right, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थी. so this is going to be the equation 1. अब अगर equation 1 और equation 2 को देखें, so हम कह सकते हैं दोनों ने AC और BD दोनों जो हैं वो OQ के ऊपर 90 का एंगल बना रही हैं. this implies that AC is parallel to BD by 1 and 2, and we can also write that because both AC and BD are perpendicular to OQ. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर पैरेलल, राइट. एज आई सेड कि अगर मैं इसको लाइन 1 कह देती हूँ, इसको लाइन 2 कह देती हूँ, इन दोनों ने इसके ऊपर 90 का एंगल बना दिया L3 के ऊपर. सो जब ये 90 का एंगल बन जाता है तो वी कैन से द टू लाइन्स आर पैरेलल, राइट. होप यू अंडरस्टैंड द सम. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.